Hello everyone, welcome to the channel CSC Scholar Studies. In this lecture, I will solve the problem based on the NFA. In the previous lecture, I have discussed about the NFA, and in this, I will solve the problems on the NFA. Let's start. So the problem is construct the NFA of the given input symbol A and B. First, condition is each strings end with either ABA or BBA, means the string end with ABA or BBA, either means ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, right? So the string is like A B A, this is the smallest string, and B B A, this is the second smallest string, and here it will come A B and B A and A B B A. These are the some string for the given condition. So the language are these, and it will infinite. So first we will draw the NFA for the smallest string, right? Smallest string, and these two are the smallest strings. So we will start from initial state. Suppose the initial state is a Q0, right? And smallest string is A B A. We direct draw the NFA for the smallest string because there is no condition limit for transition. Means we can draw any number of transition for any input symbol. So we can easily draw the NFA. And next string is a start with the B A, right? Questions is said that either end with the ABA or BBA. So we draw the two smallest string NFA and merge it and give the name of the state Q1, Q2, Q3 and Q4, Q5 and Q6. And these last two are the final state because according to the question it either it is correct, either this is correct, right? And for the another further string like this or this, we draw the look for the A and B at the initial state is the NFA of the given question. Now we will see solve the second question. The question is the last two symbols are same for same A and B input, means last two symbol BB और A. लास्ट टू सिंबल मतलब लास्ट में आपके या तो ए आएगा या बीबी आएगा, इसके स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो द स्ट्रिंग इज ए बीबी, बस लास्ट के दोनों सेम होना चाहिए. ए बीबी भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, राइट? दीज आर the some string of the given language. So first we will draw the smallest string. These are the smallest string for the condition. So for the smallest string a either b b, और तो है नहीं, तो हम दो दो फाइनल स्टेट नहीं दे सकते क्योंकि हमें क्या है कि दो सिंबल सेम होना चाहिए. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम इसको एक ही स्टेट पे लेके जाएंगे. और इनिशियल स्टेट कोई होगी, सपोज Q0, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गई Q3, राइट? एंड ये हो जाएगी आपकी फाइनल स्टेट. तो हमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो A मिल जाएगी और B भी मिल जाएगी. नेक्स्ट हमारा कुछ भी आ सकता है, आइदर A है, B है, तो हम यहाँ पे सिंपली AB का रूप दे देंगे. दिस इज द NFA ऑफ द गिवन क्वेश्चन. So there are another question we will solve in the coming lecture. So thank you.